Alright, guys, welcome back again to the Education Diary. Today, we are going to be having a roadmap for the big data. This stream, this course, or we can say this particular stream, of course, is a very trending field right now. The technology which is going to be for the data science requirement is a big data. Now, the name, as usual, would suggest is the big data, which actually means the data, lots and lots of data, but not only in the form of MB or KB, but in the form of zettabyte or petabyte, or we can say terabyte. So all these values basically makes the big data. And of course, this is something which is being used by the organizations, companies, we can say departments, finance departments, or in the banking. So overall, everywhere जहाँ पे भी that if you want to get some information or insight based into your organization कि कितने members या कितने students जो है यूनिवर्सिटी में enroll हुए, कितने साल में क्या उनका census रहा, क्या उनका insight रहा. So whenever you are trying to get a valuable information from these data, so उसको हम लोग basically big data के form में लेके आ जाए. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट बिग डेटा इज़ समथिंग जिसमें आपका जो डेटा है वो मिलियंस और ट्रिलियंस में होता है. ऑल राइट, सो लाइक हंड्रेड्स एंड मिलियंस, वी कैन से हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एट लीस्ट. सो यहाँ पे अगर हम लोग को किसी टारगेट ऑडियंस में हम लोग को टारगेट करने, लाइक सपोज इफ़ यू आर हैविंग कंट्री बेस्ड इन इंडिया, राइट, सो इंडिया के अगर बेस में हम लोग किसी इंडियन ऑडियंस को अगर हम लोग ओवरऑल टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जो एक्सेल शीट है उसमें we are having the contact informations of millions of people who are not actually the part of India. So हम उस डेटा को स्क्रैप करेंगे, स्क्रैप करने के बाद उस डेटा में से वैल्यूएबल इंसाइट्स निकालेंगे और प्लस जाके हम उस डेटा में से +91 जो कोड है इंडिया का उसके नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे. सो ओवरऑल अब इन नंबर्स में भी हो सकता है कि कई एरर्स हों, हो सकता है ये 10 डिजिट के ना होंगे, 9 डिजिट के हों, 8 डिजिट के हों. सो वेन एवर वी आर हैविंग सम सच काइंड ऑफ सिचुएशंस या हम लोग कह सकते हैं पोजीशंस, उनको नल वैल्यूज़ बोला जाता है. और तो हम लोग को अगर कल को ऐसे डेटा को हम लोग अपना दैट इम्प्लीमेंट करते हैं सॉफ्टवेयर्स में, तो सॉफ्टवेयर कभी कभी काम नहीं करता बिकॉज यू आर हैविंग सम नल वैल्यूज़. सो इसीलिए वी आर हैविंग द फील्ड ऑफ बिग डेटा जिसके अंदर यू आर हैविंग डेटा एनालिटिक्स, right? So of course big data is a part of data science, right? We are not saying like big data and data science are equal, but data science के अंदर जो है big data is a very major course, और big data के अंदर data analyzing या data analytics आता है जिसमें आप डेटा को एनालाइज करते हैं, स्क्रैप करते हैं, उसके बाद उसको दैट स्ट्रिंग वैल्यूज़ के थ्रू उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एडजस्ट करते हैं बेस्ड ऑन द वेरिएबल्स एंड वेरिएशंस या कॉम्बिनेशंस. फिर आपके पास जो अल्टीमेटली लास्ट आउटपुट आता है दैट इज़ गोइंग टू बी द डेटा विच इज़ यूजफुल फॉर यू और फॉर योर company. All right, so today we are going to be having some of the very basic roadmap of the big data. So what is basically the big data? We are going with the definition and evolution. So big data is something in which we are having a loads and loads of data which is going to give us the valuable insight. Now this data can be unstructured data or the structured data. Unstructured data is something which is raw data in which we have to make the data first of all into structured, then only we will be getting some valuable insights. While there is another category which is the structured data, which is already by default in a proper way, and we can implement this structured data into further machine learning, we can say algorithms, or we can implement into the program or software directly. Right, evolution की बात करी जाए, so since 1971 when we were having the first chip computers, उसके बाद second generation computers ENIAC EDSAC की बात आती है. So programming से ही अगर हम लोग बात करें, so we are having loads and loads of data. जितने भी programs बहुत पहले से लिखे जाते थे which were being used in the transistors, third generation या fourth generation industrial revolution, जो भी हम लोग का industry 4.0 है. तो जब से हम लोग की प्रोग्रामिंग या ऑपरेटिंग सिस्टम्स या कर्नल्स जो हैं हम लोग के ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट किए गए हैं प्रोग्राम करना, सो तभी से बिग डेटा की शुरुआत हो गई थी. ऑफ कोर्स राइट नाउ इफ़ वी आर हैविंग द फेसबुक एप्लीकेशन या फिर व्हाट्सएप हो गया, या वी आर हैविंग सो मेनी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एप्लीकेशंस, ये सारे ही एप्लीकेशंस को मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कोड ऑफ लाइन्स में लिखा गया. एंड ऑफ कोर्स बैक एंड में तो पूछो ही ना, क्योंकि बैक एंड में लोग डेली के डेली हर सेकंड में कितनी फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे हैं, कितनी डाउनलोड कर रहे हैं.
तो डेटा बहुत 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 ज़्यादा है, राइट? सो एवोल्यूशन इज समथिंग विच हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड व्हेन द कंप्यूटर वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, राइट? उसके बाद डेफिनेशन मैंने आपको बता दी. नाउ की कैरेक्टरिस्टिक्स, वी आर हैविंग 4V विच इज़ गोइंग टू बी द वॉल्यूम, वेराइटी, वेलोसिटी एंड वेरासिटी. अगर आपने बिग डेटा कोर्स में इनरोल किया है, सो वी वर हैविंग अ वेरी डीप डिस्कशन ऑन दीज 4V. ऑफ कोर्स मोर एंड मोर वी कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्यूचर. वॉल्यूम, क्योंकि बिग डेटा है, सो वॉल्यूम जो होगा उसका ज़्यादा होगा. डिफरेंट तरह का डेटा हो सकता है. इट कैन बी बेस्ड ऑन JPG, PNG, MP3, MP4, और इट कैन बी बेस्ड ऑन वेब और एनी काइंड ऑफ फॉर्मेट, राइट? वेलोसिटी की बात होती है, सो डेटा कितनी जल्दी प्रोसेस किया जा सकता है, उसको कितनी जल्दी एक इंसाइट के तौर पे बनाया जा सकता है, दैट इज़ गोइंग टू बी कमिंग इनटू वेलोसिटी. एंड एट द वेरी लास्ट, वेरासिटी, दैट मीन्स कितनी वेराइटी का डेटा हमारे पास अवेलेबल रहता है, दैट इज़ गोइंग टू बी योर वेरासिटी. आफ्टर दैट वी आर हैविंग सम हिस्टोरिकल ओवरव्यू एंड माइलस्टोन्स. हिस्टोरिकल ओवरव्यू की बात हम लोग करते हैं. सो हिस्टोरिकल ओवरव्यू में अगर बिग डेटा की शुरुआत देखी जाए तो रिसेंटली 2017 में स्टार्टिंग करी गई थी. सो 2017 में जब हम लोग के पास एक नई वैल्यू बन के आई थी, दैट वाज बेसिकली जेजाबाइट, राइट? सो आफ्टर जेटाबाइट वी वर हैविंग अ न्यू वैल्यू which was zettabyte. And after coming of ChatGPT in 2023, तो हम लोग को LLM के बारे, जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बारे पता लगा था, जिन पे जेटाबाइट की वैल्यूज़ या पेंटाबाइट की वैल्यूज़ को यूज़ किया जाता है. एंड वहाँ से बिग डेटा की एक शुरुआत काफ़ी ज़्यादा बूमिंग इंडस्ट्री में लोग कह सकते हैं हुई. आफ्टर दैट वी आर हैविंग सम इंपॉर्टेंस ऑफ बिग डेटा, एनहांस डिसीजन मेकिंग. सो अगर आपके पास डेटा ज़्यादा है, आप मशीन लर्निंग में जब उसको यूज़ करेंगे, एल्गोरिदम्स में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जाहिर है बेस्ड ऑन सो मच डेटा जो मशीन है वो एक्यूरेट वैल्यूज़ आपको प्रोवाइड करेगी, कोशिश करेगी मशीन आपको प्रोवाइड करे. सो जितना ज़्यादा डेटा आपके पास है उतना ईजी आपके लिए होगा मशीन को लर्न करना या सिखाना. ऑफ कोर्स इफ़ यू आर हैविंग द डेटाबेस ऑफ द फेसबुक, तो फेसबुक में जितने भी आज मिलियंस या दैट बिलियंस ऑफ लोगों ने अपनी आईडीज़ या प्रोफाइल्स बना के रखी है, अगर इन सभी की इमेजेस हमारे पास पहले से सेव हों, सो वी कैन क्रिएट अ प्रोग्राम विच कैन आइडेंटिफाई द पर्सन based on that database. So as usual, enhanced decision making depends on the data you are having. The more data you have, the more accuracy will be in that particular model. Innovation and new business models. So as usual, big data के आने के बाद we are having so many innovations based on different GPT models or AI models, राइट? बिकॉज बिग डेटा के आने के बाद, और वी कैन से सिंपली LLM मॉडल्स के आने के बाद, देयर आर टन्स एंड टन्स ऑफ AI टूल्स विच आर डेली इंट्रोड्यूस्ड, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा डेटा है. एंड बेस्ड ऑन दैट डेटा ओनली दे आर एबल टू परफॉर्म टेक्स्ट टू इमेज और टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन, टेक्स्ट टू साउंड जनरेशन एंड सो मच ऑन. बिजनेस मॉडल्स में जिसके पास ज़्यादा डेटा होता है, अगर वो अपनी कंपनी की डेटा के इनसाइट्स या वैल्यूएबल आउटपुट को देख सकते हैं कि एक साल में उसकी कितनी सेल हुई है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना नेगेटिविटी हुई है, दैट इज़ गोइंग टू बी ऑफ कोर्स अ वेरी गुड थिंग फॉर द कंपनी. और इस बेस पे कंपनी बिजनेस मॉडल्स को क्रिएट ऑन कर सकती है. थर्ड इज़ गोइंग टू बी इम्प्रूव कस्टमर इंसाइट्स एंड रिलेशनशिप्स. एज यूजुअल, अगर हमारे किसी प्रोडक्ट को कस्टमर्स कम परचेज करते हैं, सो वी आर गोइंग टू बी हैविंग इंसाइट्स. कौन से रीजन में ज़्यादा लोग परचेज कर रहे हैं, क्यों इतना परचेज कर रहे हैं, एवरी रीज़न वी कैन हैव बाय यूजिंग द बिग डेटा. क्योंकि बिग डेटा का मतलब वेरिएशंस होता है कि अगर कस्टमर इस रीजन में ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद रहा है तो ऐसा क्या रीजन्स या क्या मल्टीपल वेरिएशंस या फैक्टर्स हो सकते हैं, कितनी उम्र का इंसान इस पर्टिकुलर रीजन में ज़्यादा खरीद रहा है, जेंडर उसका क्या है, उसकी एज क्या है. सो वी आर हैविंग अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंट वेरिएशंस. और इस बेस पे हमारे पास डेटा जो एक नॉर्मल डेटा होता है वो एक बिग डेटा में कन्वर्ट हो जाता है बेस्ड ऑन द वेरिएशंस. एफिशिएंसी एंड कॉस्ट रिडक्शन. एज यूजुअल, जितना आपके पास डेटा ज़्यादा होगा उसकी एफिशिएंसी आपके मॉडल की उतना ज़्यादा बढ़ेगी. कॉस्ट रिडक्शन इसलिए बिकॉज इट्स नाउ डेज वेरी वेरी ईजी टू यूज़ द बिग डेटा. We can say concepts into your softwares or anywhere, and based on that you will be having the cost reduction. After that, we are having competitive advantage, because if you are competing with any of your we can say company, so in that also you are having an advantage of using the big data for that particular company in order to gain more and more sales, or if you want to introduce more and more products based on the competition which you are having. That is also something which is really great. एसेंशियल्स की हम लोग बात करते हैं. बिग डेटा में मेजरली क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए. सो वी आर गोइंग टू बी ट्राइंग, मे बी होपफुली इन द कमिंग वेबिनार्स आई एम गोइंग टू बी पर्सनली ट्राइंग
to have the AWS, we can say, implementation. So AWS web server or AWS is something which is really really important, which is coming in the cloud platform. So cloud storage और cloud platform के बारे आपको एक knowledge होनी चाहिए. And I'll be personally trying to do this kind of webinar as soon as possible, because cloud platform is something which is really really important part of the big data. After that we are having sources of data. आपको IoT devices के बारे में पता होना चाहिए. IoT devices में sensors आ जाते हैं, that breadboard आता है, wiring connections आते हैं, so cabling आती है, how actually you make the Arduino programs or everything, राइट. सो सेंसर्स की आपको एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि आप सेंसर्स के थ्रू डेटा को कलेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन क्रिएट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ बिग डेटा बाय यूजिंग द सेंसर्स ओनली. आफ्टर दैट वी आर हैविंग सम टेक्निक्स एंड टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन एंड डेटा स्टोरेज. जैसे कि मैंने आपको बताया कि HDFS, Hadoop, द डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम, मैप रिड्यूस. We are having so many different, we can say, tools. Tableau हो गया, which can be used बेस्ड ऑन द बिग डेटा. आपको इन सारे सॉफ्टवेयर्स या इन सारे स्पेशली HDFS, हडूप आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेक्निक्स एंड टूल्स विच कैन बी यूज इन द बिग डेटा, और काफ़ी ट्रेंडिंग है इंडस्ट्री में, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है HDFS. इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी हैविंग नॉलेज ऑफ सम काइंड ऑफ टूल्स विच कैन बी यूज्ड इन द बिग डेटा. आफ्टर दैट स्टोरेज सोल्यूशंस. अगर हम लोग डेटा बेसिस की बात करें, डेटा लेक्स की बात करें, सो यू शुड बी हैविंग सम नॉलेज ऑफ द डेटा बेसिस लाइक Maria database. We are having MariaDB, NoSQL database or MySQL database. So it's really important to have at least some of the basic knowledge of the databases. क्लाउड स्टोरेज के बारे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लाउड स्टोरेज के आपको एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्लाउड प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है, right. In that only we are having the part of data processing, so we will be trying to check out about the cloud platform like the AWS, or we are having recently Linode, right. So Linode, AWS, Microsoft, all these actually companies provide the cloud platform on which you can upload or integrate your own server, web server, based on the big data. आफ्टर दैट वी आर हैविंग डेटा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन. सो एज यूजुअल डेटा क्लीनिंग का मतलब वही होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ वैल्यूज़ डेटा में नल होती हैं या ज़ीरो होती हैं, सो यू आर गोइंग टू बी मेकिंग दैट डेटा इनटू अ प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर डेटा में. तो जब आप इस रॉ या फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एक स्ट्रक्चर डेटा में कन्वर्ट करेंगे, यू शुड बी हैविंग अ नॉलेज ऑफ डेटा क्लीनिंग एज वेल एज प्रिपरेशन. Data mining and analysis techniques. So as usual, you should be having a prior knowledge of the Python language, because data cleaning and preparation is something which includes your Python, right. So data cleaning is, जैसे कि मैंने बताया कि आप पहले डेटा को क्लीन करेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को आप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे, और उस स्ट्रक्चर डेटा में से आप वैल्यूएबल इनसाइट्स को एज एन आउटपुट कंपनी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं. या बेस्ड ऑन द सिनेरियोज यू आर गोइंग टू बी माइनिंग द डेटा. दैट मीन्स getting some insight from the structured data, and you are going to prepare or present that into the company or as an output result. After that we are having real-time processing versus batch processing. So real-time processing is something in which is going to be working in the real time. Batch processing is not going to be working on the real time, but we are going to train the program or the model and it will be processed after सम टाइम. लाइक सपोज अगर हम एक मशीन को सिखाते हैं कि वो हमारे फेस को रिकोगनाइज कर पाए, दैट इज़ गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द रियल टाइम प्रोसेसिंग, बेस्ड ऑन द डेटा सेट जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे उस प्रोग्राम को. लेकिन बैच प्रोसेसिंग में हम डेटा प्रोग्राम को जब प्रोवाइड करेंगे, सो वो ऑन स्पॉट रियल टाइम ना करके वो बाद में करेगा. दैट मीन्स बैच प्रोसेसिंग बेसिकली टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड द डेटा, to that we can say upload the data, right. So in that logic, so batch processing is something which is going to understand the data and it will not do any real time functionality. Descriptive analytics and predictive analytics, it's very easy and simple terms to understand कि आप descriptive analytics, आप जो भी आपके पास डेटा है, आप उस डेटा में से क्या डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आप कर सकते हो, क्या उस डेटा का मेन यूज़ है, कहाँ पे आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज़ गोइंग टू बी कमिंग इनटू द डिस्क्रिप्टिव मैनर. प्रिडिक्टिव, जैसे कि नाम बता रहे हैं कि आप यूजिंग दैट पर्टिकुलर डेटा क्या प्रिडिक्शंस आप लगा सकते हो, क्या टाइम सीरीज प्रिडिक्शंस आप कर सकते हो, दैट इज़ गोइंग टू बी कमिंग इनटू द प्रिडिक्टिव
एनालिटिक्स। सो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के बाद आता है डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन, अब आपने प्रिडिक्शन कभी किसी डेटा के बेस पे करी फॉर दी अपकमिंग 2 days, 1 week, 1 year, अब आप उसको डेटा को विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हो, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करी जाती है विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए। जैसे कि मैंने बताया, यू शुड बी हैविंग नॉलेज ऑफ टैबलो. So Tableau is very industrial used software. So if you are not familiar with the Tableau, so it's important to understand about Tableau, on which you can do your visual representation. After that, we are having dashboards and reporting. So on the Tableau only, we are having some dashboards as well as a reporting section, from where you can make multiple dashboards. ठीक है, कि अगर आप किसी सिटी में पॉपुलेशन बढ़ी है, कम हुई है, कितने कितने नंबर से कम हुई है, सो बेस्ड ऑन योर प्रीवियस डेटा सेट अब वो प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आने वाले 2 सालों में या 2 महीनों में क्या पॉपुलेशन बढ़ेगी, कम होगी. सो बेस्ड ऑन ऑल दीज सिनेरियोज यू कैन क्रिएट योर ओन डैशबोर्ड्स एज वेल एज रिपोर्ट्स. डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ऑफ कोर्स किसी भी सेक्शन में आप जाते हैं, मशीन लर्निंग, एआई, कंप्यूटर विजन, सब में डेटा की सिक्योरिटी और एक प्राइवेसी इंपॉर्टेंट होती है. सो यू शुड बी हैविंग सम बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, कि यहाँ डेटा को सिक्योर कैसे रखना है, क्या मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारा डेटा सिक्योर रहे. Challenges and threats is something which is really important, which comes under the SWOT analysis. कि आपको जब SWOT analysis आप करते हो कि strength, weaknesses, opportunity और threats किसी भी कंपनी के, so you have to gather that and then you have to compare that with your own particular organization or company. So challenges and threats is basically part of that. Regulatory compliance, example GDPR और HIPAA. So regulatory compliances में कुछ कंट्रीज़ में आप बिग डेटा का यूज़ किसी भी कंपनी की इंफॉर्मेशंस को एक्सट्रैक्ट करने में नहीं कर सकते. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या इंडिया में ऐसा कोई लॉ तो नहीं है जिसमें आप किसी कंपनी के डेटा को स्टोर कर रहे हो विदाउट taking the permission of that particular company. So it's really important that whenever you are storing any kind of financial assets, or we can say stock prices of a company of last 1 year, 2 years, so you should be having some permission from that company. It's really important and it's coming under the regulatory compliances. Best practices for data security, this is same like the cyber security. सो उसके बाद हमारे पास बात आती है कि बिग डेटा की टेक्नोलॉजीज और टूल्स. जैसे कि मैंने बताया आपको, हडूप इकोसिस्टम या HDFS इज़ रियली इंपॉर्टेंट. नो एसक्यूएल डेटाबेसेस, यहाँ पे मारिया डीबी की हम लोग बात कर सकते हैं. आप मारिया डीबी लर्न कर सकते हो या नो एसक्यूएल कर सकते हो. मशीन लर्निंग और एआई बिग डेटा में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है. सो ओवरऑल हर चीज़ एक दूसरे से ओवरऑल कनेक्टेड रहेगी. आफ्टर दैट वी आर हैविंग डेटा वेयर हाउसिंग सोल्यूशंस. डेटा वेयर हाउसिंग सोल्यूशंस का मतलब होता है कि हम डेटा को कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, कितने सेक्शन बाय सेक्शन में स्टोर कर सकते हैं. दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग टू बी लर्निंग अबाउट दी हडूप. इन दैट हडूप वी आर हैविंग मैप रिड्यूस, जो कि बड़े डेटा को डिवाइड कर देता है मल्टीपल सेक्शंस में, और तभी वो हमारे सामने डिस्प्ले करता है जब हम उसको कमांड देते हैं. अदरवाइज जो हमारे मल्टीपल सेक्शंस हैं वो हमेशा डीएक्टिवेट रहते हैं. राइट, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट. डेटा वेयर हाउसिंग का मतलब है कि आप अपने बिग डेटा को स्टोर कैसे करते हो. सो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट स्टोर 1 TB और 100 TB एट वंस इनटू योर कंप्यूटर. सो अगर एक नॉर्मल एग्जांपल समझें, सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन डिवाइड दिस 100 TB इनटू टेंस ऑफ 10 TB. ठीक है, सो हम 10 10 TB के 10 सेक्शंस बना सकते हैं, और इन सेक्शंस में हम कौन से सेक्शन को एक्टिवेट करके उस सेक्शन पे काम करना चाहते हैं, दैट इज़ समथिंग द पार्ट ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग. आफ्टर दैट बिग डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैंने बताया टैबलो इज़ द बेस्ट वन विच वी कैन एक्चुअली लर्न ऑन. सो उसके बाद बात आती है हमारे पास कि डेटा स्ट्रैटेजी, बिग डेटा स्ट्रैटेजीज़ में हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं. वी आर हैविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. जैसे कि ऊपर हम लोगों ने नॉर्मल से इंट्रोडक्शन देखा कि वी आर हैविंग मल्टीपल सिनेरियोज, मल्टीपल केसेस वेयर वी कैन यूज़ द बिग डेटा in improving the sales as well as the profit of your own organization. So we can actually build a skill team, data governance and quality management, technological section, and then infrastructure planning, measuring ROI and impact. So these all terms can be used into the form of growing up your business. It's really important. After that, we are having some challenges and future directions. So how you are going to manage your data growth, that means time to time आपका data जो है वो 100 TB की जगह 200 TB का हो जाएगा. So how you are actually going to manage all these data growth is something which is really important, because you cannot upload your data to the Google Drive. ठीक है, ये नहीं कि आप 100 TB को Google Drive पे अपलोड करो, which is actually not possible.
After that, we are having integrating diverse data sources, multiple data points को आप एक दूसरे से कैसे connect करते हैं, that is also something which is really important. Ethical considerations and bias, so this is coming of course in the best practices for data security, nothing to worry about. Future trends in big data, quantum computing, edge computing, which is really, we can say, booming industry. Quantum computer is something which I really prefer and like. इसमें ही हमारे पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी आ जाती है कि आप बिग डेटा का यूज़ करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कैसे इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं. वी कैन एक्चुअली राइट अ रिसर्च पेपर ऑन दैट एज वेल, राइट. सो इट्स रियली अ गुड थिंग टू रीड रिसर्च पेपर्स. मैं कई बार स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि अगर आप दैट ये सारी चीज़ें सीखते हो, सो rather दैन रीडिंग द बुक्स, गो फॉर योर रिसर्च पेपर्स, क्योंकि आपको इसमें सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा. एंड यू कैन फाइंड सम वीकनेसेस और लूप होल्स, and you can make or write your own research papers, and you can publish them into some good journals like Nature, right? So Elsevier, Nature, so these are some really good journals where you can publish up your research papers. It's kind of like a part of your study. After that, we are going to be having some conclusions. So overall, this was the view and the roadmap for understanding the big data. Now, in big data, you should be having knowledge of all these sections which I have included, starting from the IoT, sensors, devices, data collection, data storage, कैसे करना है, databases की knowledge, data processing की knowledge, cloud storage या cloud platform की knowledge आपको होनी चाहिए, data cleaning कैसे होता है, data mining, real time processing कैसे करी जाती है, descriptive analytics या predictions कैसे किए जाते हैं, tools, multiple tools जैसे कि मैंने बताया, Hadoop file system हो गया, Tableau हो गया, Excel, MS Excel is also sometimes very vastly used in the industry. So MS Excel में भी graphs होते हैं, आप MS Excel में भी predictive analysis कर सकते हो. So if you are good in MS Excel, if you know about using MS Excel at the very best, it's really good. But अगर आप MS Excel से बिल्कुल भी, you just do MS Excel for normal calculations or we can say spreadsheets, so it's very much to go with the Tableau software. I personally believe so. Tableau is something which is having 1 month free. After that, you have to take some license in the Tableau. But we will look into future how we can actually use some different softwares rather than Tableau for this particular approach. Alright, so overall, this was the view of the big data. It was a very basic introduction of the big data, some steps by steps, what you can use, what you have to learn in the big data courses, something like that. So if you are going to be having any questions, make sure to send email to the education diary, or if you're having any problem or doubts, you can just comment down onto the YouTube channel so that we can move forward and we can discuss for the problem on the problem which you are having. So thanks a lot, guys.